अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग मैंने थर्सडे के दिन शुरू किया था जब मेरे ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गए थे। आफ्टर माई ऑनलाइन क्लासेस आई टुक अ नैप एंड देन आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक बिकॉज आई हैड अ मीटिंग टू अटेंड। मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, हमारे हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस भी शुरू होने वाले हैं 2 हफ़्ते के बाद। लेकिन उसके लिए हमें वैक्सीनेशन करना है। अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो हमें PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा हर वीक। आई एम काइंड ऑफ नर्वस एंड काइंड ऑफ एक्साइटेड, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं या ऑनलाइन क्लासेस। सो इन दिस व्लॉग आई ट्राइड स्पीकिंग इन Hindi/Urdu because most of my viewers are from Pakistan and India. So do let me know in the comment section how do I speak Hindi/Urdu, and I'm not fluent in these languages, so bear with me, and if I make any mistakes do let me know in the comment section and try to correct me. After having a break I organized my table because after classes I just took a nap. I was really tired after a week of online classes. ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद अभी मैं एक मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। इस मीटिंग में हमारे एग्ज़ाम स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा टीचर्स ने हमें बताया था कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होने वाले हैं, तो इसलिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं अपने वीडियोस में Hindi/Urdu में बात करूँ या मैं इंग्लिश में बात करना कंटिन्यू करूँ। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. It's 7 p.m. right now and I joined for the meeting and I was in the waiting room and then she let me in the meeting. And here am I having some Capri Sun and my brother is watching Cocomelon. While we were joining our classes, my dad was in the market. He brought some home decor stuff. He brought these 2 wall frames. Then these wall stickers, butterfly themed wall stickers. Also dad bought this wall clock which we stuck in our living room. Also he bought this black shoe stand. After joining my meeting I just was keeping and organizing the stuff that my dad bought, and then I came to the kitchen. Here my mom was making Karela curry, and then I was just chilling with my siblings having some sunflower seed. यहाँ हम और मेरे सिबलिंग्स हम साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और नशीद सुन रहे हैं, अरबिक नशीद्स। लास्ट क्लिप के बाद मैंने बहुत कुछ क्लिप शूट नहीं किया, तो इसलिए अब नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन मैं सुबह उठ के मैं नाश्ता किया, अपना रूम क्लीन किया और उसके बाद मैं क्लोथ्स फोल्ड कर रही हूँ अभी। जब मेरे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं मैं इतना काम नहीं करती हूँ उस दिन, लेकिन जब वीकेंड्स होते हैं तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। On days when I have online classes, I don't do anything. I have the same routine. I wake up early in the morning. I do some homeworks because the night before I don't do any homeworks. I do all the homeworks in the morning time. In the night time, I just study the topics which the teacher will ask me in the next day. But most of the times I don't do homeworks because just I'm too lazy to do homeworks. And here my sister brought another bunch of clothes which I'm folding right now. Most of the time during weekends we try to help our mom with some work because while online classes we don't do any work, we are already busy with our online class. After folding the clothes, here I am cleaning the kitchen a bit. It's not that only I am doing the work, my siblings are also helping me. My brother sometimes they clean the living room and my sister was washing clothes this day, and my younger sister, she was dusting the doors and stuff, so together we do all the work. थोड़ा बहुत क्लीनिंग के बाद मैं रेस्ट भी करती हूँ, लेकिन वो मैं कैमरा में शो नहीं करती। रेस्ट करती हूँ मसलन मैं पानी पीती हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग करती हूँ और यूट्यूब वीडियोस भी देखती हूँ कभी कभी। And it was a Friday. Actually we try to do some work on Thursday night itself so that in the mornings we are free. But as you saw in the last clip that we had a meeting, and then because of online classes I was really busy, so I was just chilling on the Thursday night, and then I took a great sleep, and morning I was really energetic, so I did some work.
काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद मैंने ट्रे से डिशेस वॉश किए। डिशेस वॉश करने के बाद मैं उनको कबोर्ड्स में सेट कर रही हूँ। Here I call my sister to help me and she's just cleaning the upper cabinets of the kitchen. Just a little bit of cleaning and dusting here and there. यहाँ जब मैंने डिशेस वॉश किए थे उनको मैं यहाँ रख रही हूँ कि वो सनलाइट की वजह से थोड़े से ड्राई हो और मैं उसके बाद मैं उनको ड्रॉयर्स में रखूँगी। यहाँ मैं नीचे से सामान और मसाले और स्पाइसेस अपनी बहन को दे रही हूँ कि वो ऊपर कैबिनेट्स में सेट करके और क्लीन करके रखे। आप देख सकते हैं मेरी बहन ने इतने सफाई से सब कुछ रख दिया है और सेट करके रख दिया है। इन कैबिनेट्स को सही करने के बाद मेरा काम फिनिश हो गया था और मैं चली गई थी अपने ड्रेसेस जुम्मा के प्रेयर के लिए तैयार करने के लिए। और अपने काम के बीच बीच में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी अपने काम के बीच में पानी ज़रूर पिया करें। यहाँ मैं सब होमवर्क्स और असाइनमेंट्स लिख रही हूँ जो मुझे करने हैं इस वीक के लिए। I woke up early so I got all the work done pretty early. Like now after 10 minutes it was 10 o'clock here and I got a majority of the work done. Then after resting and talking with my siblings, I remembered that I have to complete my physics notes which were pending because of some internet issues while online classes. मेरे फ्रेंड्स बहुत काइंड है, जब भी मैं उनसे नोट्स पूछती हूँ वो सेंड करते हैं। वो भी जानते हैं कि मेरे इंटरनेट इश्यूज़ हैं। यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ जो पेंडिंग थे और उसके बाद मुझे बात भी करना था और प्रे भी करना था जुम्मा। You can see my friend's handwriting. It is so good and my handwriting is so horrible. I was just admiring her handwriting. After completing the note, my mom asked me to wash some rice. She was making biryani, of course, every Friday. Mostly my mom makes biryani. I am back from washing the rice and here I am organizing my notes by making some black lines and dividing the notes. After that my brother came near me and he started singing nasheed, so I filmed that. Day night. No, just like the river meets the sea. Oh Allah, you are here, you always near, and I know without a doubt you always hear my prayers. सच की राहों पे चला करो, दुख न किसी को दिया, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like the sunrise can be denied, oh, just like the river meets the sea, oh Allah. After some fun, I'm back here in the kitchen. My mom said me to film this, so I decided to film this. Here I'm helping her to make biryani, so I fried some onions first. यहाँ मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, तो उसके लिए पहले हम अनियंस को थोड़ा फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर करेंगे और उसके बाद इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। और मुझे पता है चिकन बिरयानी बनाना बहुत आसान है, फिर भी मैं ऐसे ही आप सबको बोल रही हूँ। फिर उस चिकन को डालने के बाद उसे हम थोड़ा सा फ्राई करने के लिए रखेंगे। वो थोड़ा सा गोल्डन कलर चिकन हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको ऐसे डेली व्लॉग्स पसंद है तो मैं और ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगी इंशाल्लाह। जब थोड़ा बहुत चिकन पक जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फिर जिंजर और गार्लिक को डालने के बाद हम उसको सही से मिक्स करेंगे। फिर कैप को 5 मिनट के लिए क्लोज़ करेंगे और उसके बाद हम बिरयानी मसाला थोड़ा सा डालेंगे। आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से।
जब चिकन मसाला डालेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करिए और फिर लिड को फिर से क्लोज़ कीजिए कि वो फ्राई हो जाए, थोड़ा सा और फ्राई हो जाए। उसके बाद हम टमाटोज़ को ग्राइंडर में उसे ग्राइंड करके डालेंगे। आप लोग ऐसे भी डाल सकते हो, कट करके, डाइस्ड कट करके डाल सकते हो, लेकिन ये आपके चॉइस में डिपेंड करता है, आपको कैसे अच्छा लगता है आप वैसे करिए। हमने आलू भी डाले हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस में है कि आप आलू डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर नहीं चाहते तो मत डालें। लेकिन मेरे भाइयों को पसंद है और मेरी छोटी बहन को भी पसंद है, तो इसलिए हम लोग डालते हैं। टमाटोज़ को थोड़े डालने के बाद हमने लिड को क्लोज़ किया। उसके बाद आलूज़ भी ऐड कर लिए और फिर उसके अंदर पानी ऐड करके लिड को क्लोज़ किया। पानी को ऐड करने के साथ साथ आप थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक से। ढक्कन को फिर क्लोज़ कीजिएगा, फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए कुक कीजिएगा और उसके बाद आपका सालन रेडी है। फिर उसके बाद मैं कमरे में गई तो मंसूर वाज प्रेइंग देयर, सो आई टोल्ड हिम टू प्रे सो दैट आई विल गिव यू जूस आफ्टर प्रेइंग। Middle of the prayer he was seeing my siblings playing with some book, so he got up from the prayer and then after that I gave him the juice. Yay, strong boy. Yay, finish. Now take one juice, finish. Take one juice. Then after all that work I am having my favorite juice. Here the biryanis are ready. Actually my mother wanted to add some colors, but it was not available in the house at that moment, so she didn't add. Then we made some salad and had some pomegranate with the salad, with the biryani too. In the evening time we had some snacks which my dad bought from the bakery. यहाँ मैं डिनर के लिए मैगी बना रही हूँ, नूडल्स बना रही हूँ। नॉर्मली हम लोग नूडल्स कम खाते हैं, लेकिन ओकेजनली हम लोग बना लेते हैं। यहाँ मैं सिंपल मसाला नूडल्स बना रही हूँ। आई एम मेकिंग सिंपल मसाला noodles. So for that I took some oil in a pan and added some onions and fried them for 5 minutes approximately, and then added some capsicum in it. You can add any vegetables you want. I just added these two vegetables, which were onion and red bell pepper. You can add any bell pepper, green or yellow or red, and many vegetables you can add. I didn't have that much vegetables at the moment, so I add just two. After cooking the vegetables for some time, you can add spices like coriander powder, salt to taste, turmeric powder. Now in the same pot you can add the water and noodles. Here I'm cooking the vegetables for some time, and then I added the masala and the noodle masala and water and the noodles and let it cook until the noodles are made. एक्चुअली मैं फ्राइडे के दिन ही व्लॉग करना चाहती थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सैटरडे मॉर्निंग की भी व्लॉग थोड़ी सी दिखा दूँ. सो सैटरडे मॉर्निंग वी मेड सम cabbage paratha. It's like we made some salan with cabbage, and then we put it in a paratha, and then we made the paratha, fried the paratha, that's it. And then we did the same with chicken too. We took some chicken and then added in a paratha, and then we fried it in a pan. I'm editing this video on the same day I filmed it. So today it's Saturday and I'm editing this video on the Saturday itself, because I don't want to keep the video and lag it and edit it later on. So yeah, tomorrow it's teachers' celebration in our school, so we'll do an online celebration from 8 a.m. to 9:30 a.m. After that we have no classes, so I'm going to edit this video and upload it on 4 p.m. in the evening time tomorrow. Here I'm organizing and cleaning the fridge a little bit. I didn't do much this day. I was super lazy on the Saturday. I didn't do any school work also. So today for lunch we are having dal, and then my mom made some fries for my little brother. And also macaroni is made today. After a long time we are having macaroni. Didn't have dal today, so I just had macaroni. First we made some
chicken curry sort of thing, like we added some sauce and stuff and fried that thing, and then added some macaroni. Simple chicken macaroni was ready. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को देख के आपको बहुत मज़ा आया, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।